Hi everyone. So guys, hope you all are good. So in this video, I'm going to talk about one of the SQL question which is asked in one of the product-based company for a profile of data analyst. Okay. So guys, firstly, let me explain the question and then we'll move to the solution part. So for better understanding of the question, I have created this data set for myself according to the requirements. So firstly, let me explain the requirement. What is the requirement for this particular question? And I think this is the best question. So it's not complex. It's a little tricky, but it's a simple question. Okay. So firstly, let me explain the question, guys. In this question, we have a brand name. So I have given name as A B B and blah 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 blah. And we have a date and the price. Okay. So for any particular brand, customer are uh, customer are making any transaction. So here you can see that for brand A on 1st of January price was this amount, and on the 28th of February price has been increased by 501 rupees, and that is new price is 2501. So and so on. तो गाइज मेरे पास क्या है, हर एक ब्रांड का एक सेलेक्टेड टाइम पीरियड्स का प्राइस दे रखा है हर एक ब्रांड का. तो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी विल हैव टू फाइंड कि उस प्रोडक्ट का और उस ब्रांड का नाम बताओ जिसका प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रखा हो. जैसे आई मीन यहाँ पे आप देखोगे ब्रांड ए का पहले 2000, 2500, 2600, 2700 इट्स increasing continuously, but for brand here you can see that firstly price was 1000, but in the month of February it's gone decreased by 200, that is 800 is the new price. Again it's increases by 400 and then 1200 and so on. मतलब अगर जो मेरा इनपुट जो मेरा सॉरी आउटपुट आना चाहिए उसमें ब्रांड ए एक आना चाहिए कैटेगरीज, बी बिल्कुल नहीं आना चाहिए. ठीक है. So this is the overview of today question. So yeah, you can pause these videos and then you can think how will you be able to solve it, and please comment your thought. Okay. Now let me move to the my SQL. So here this is the my SQL SSMS. So I have imported this data set. If you want this data set, then obviously I will provide a link in the description box. Okay. So you can check out there. Okay. So here this is the my data set, brand, date and price. So in this question I have already explained the requirement. So what I will do, I will use lead function. So I think you already know that what is the lead. So I am going to use the lead function. So lead of this price, and then we already know that for using lead we need to use over partition and order by. So I am using over partition by this brand. Okay, sorry, not this bracket, this bracket, brand, and then I will use order by this one, date, and this is descending, and let me name this as next, something like that, next, yeah, next bill. Okay. Now let me execute this, then what we are getting. So here you can see that for brand A on 1st of January we have a 2000 amount, but in the like in the same row for next bill we are getting null values, but for next we are getting one previous value. मतलब आप देख सकते हो कि फरवरी में जनवरी का वैल्यू मैं पा रहा हूँ नेक्स्ट बिल में, और मार्च वाले मंथ में फरवरी वाला. तो this is not a good name, next will, this should be old will. Okay. Now अब क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक आने वाले मंथ में लास्ट मंथ का जो मेरा बिलिंग अमाउंट था वो मेरे पास प्रिंट हो चुका है. तो नाउ इट्स अ सिंपल कि आई विल टेक अ डिफरेंस ऑफ दिस टू कॉलम एंड देन विल फाइंड कि दिस इज इंक्रीजिंग और दिस इज डिक्रीजिंग. ठीक है. तो इसके लिए what I can do, I can put these values in temporary table as well, but in the previous videos I used temporary table. So in this video I am going to use any another method that is common table expression. So I am going to use this, let's say name this as new billing. So yeah,
with new billing, and sorry, I will have to use as and then bracket बंद. ठीक है. Now let me show you. Select a star from underscore new billing, and then you will get the same output. Here you can see that we are getting the same output. ठीक है. Now next approach would be कि find the brand name whose value is, whose difference between price and old is negative. नेगेटिव क्यों होना चाहिए? अगर मेरा कस्टमर 2 के लिए बी की बात करूं, जैसे अपन एक्सेल में अभी देख कर आ रहे हैं कि उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, तो अगर मैं प्राइस को ओल्ड वैल्यू से माइनस करूं, ओल्ड बिल से माइनस करूं, तो फॉर दिस मंथ, फॉर फरवरी, व्हाट वी विल गेट 800 माइनस 1000, दैट इज माइनस 200. मतलब मेरा वैल्यू जो ऑब्वियस है उस मंथ के लिए पिछले वाले मंथ से डाउन हो रखा होगा, डिक्रीज कर रखा होगा, तो वैसे वाले मुझे एक्सक्लूड करनी है, इंक्लूड नहीं करनी है, एक्सक्लूड करनी है. तो आई एम गोइंग टू फाइंड दैट ब्रांड हुज वैल्यू हैज़ बीन डिक्रीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ. ठीक है. तो लेट मी राइट दिस क्वेरी. सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांड फ्रॉम न्यू बिलिंग वेयर आई विल अप्लाई अ फिल्टर. ठीक है. तो वेयर प्राइस माइनस प्राइस, दिस इज द प्राइस माइनस ओल्ड बिल. ओके. ओल्ड बिल लेस देन 0, or it's showing, it's not like in the question it was not mentioned about any like constant value, so I will write less than equals to 0. ठीक है. मतलब अगर constant भी वैल्यूज रहा तो उस केस में I don't want to include that. increasing means increasing, it's not a constant. ठीक है. तो इस केस में क्या मिलेगा मुझे कि हर एक ब्रांड का मुझे वो मिल जाएगा, जैसे ए बी सी सी डी डी, इस ब्रांड का क्या हो रखा होगा, किसी एक पर्टिकुलर मंथ में वैल्यूज प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में वैल्यूज कम हो रखा होगा. अमाउंट हैज़ बीन डिक्रीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि आई डोंट वांट दिस एज माई फाइनल आउटपुट. आई वांट दोज ब्रांड हुज वैल्यू हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. ठीक है. तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे इस वाले जो भी ब्रांड आ रहे हैं इसे एक्सक्लूड करना होगा फ्रॉम माई ओरिजिनल क्वेश्चन. तो लेट मी राइट दैट queries. Select, you can say not star, select firstly let me write this star from new billing, and I will apply filter where brand should be not in, right, not in this. Now one more thing is, यहाँ पे select a star from new billing में मुझे क्या मिलेगा, ये ओल्ड बिल या फिर सारा कॉलम्स मिलेंगे, बट आई डोंट वांट दैट, सो आई वांट ओनली ब्रांड नेम. सो ब्रांड, तो सेलेक्ट ब्रांड, हियर यू कैन यूज डिस्टिंक्ट फंक्शन, सो यू विल गेट ओनली दोज ब्रांड हुज वैल्यू इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. लेट मी एग्जीक्यूट दिस. So here you can see that we are getting only three brands, A, B, B, C. If you want to see the price, then you can see. So let me print that as well. So brand, date, comma, what was the next column? Bill, I think. What was the next? I think billing. Let me execute this first. Yes, price, not bill. So price. Yeah, this is the price. So here you can see that for this A, previously we were getting only three values, that is A, B, B and C. So right now we are also getting same values A, B, B, C, but we are getting brand and then date and then price. What was the price? So here you can see that price is constantly increasing for A brand. For this here you can see price is also increasing. For C, price is also increasing. So I think this is all about today's videos. So thank you guys, thanks for watching these videos. Jai Hind, Jai Bharat. We'll meet in next videos.